Hello everyone, myself Pratima Singh, student of BA third semester, RKG Educational College, Omek City, Lucknow. Today I am going to discuss about new topic that is transmission of heat. So ट्रांसमिशन ऑफ हीट को जानने से पहले हम जानेंगे हीट क्या होती है। तो आपने देखा होगा कि जैसे आप गर्मियों में सन में किसी पॉट में लिक्विड या फिर वाटर को भर के रख देते हैं, तो कुछ समय बाद आप क्या देखते हैं, वो पानी धीरे धीरे गर्म होने लगता है। या फिर जब आप गैस स्टोव पे दूध को या फिर वाटर को चढ़ा देते हैं, तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं, दोनों ही केसेस में लिक्विड गर्म होने लगती है। और जब आप अपने हाथों को रब करते हैं और उसके बाद आप अपने चीक्स पे टच कराते हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं कि आपके हाथ धीरे धीरे गर्म हो गए हैं। ये all these examples show that heat is transferred from one object to another. So heat is form of energy that is transmitted from region of higher to region of lower temperature. So energy transfer as heat can occur in three ways. If we talk about transmission of heat, uh, when we put a vessel full of milk on gas stove, we uh, we observe that it is it starts boiling and its temperature starts rising because of transfer of heat. So heat is very important form of energy. It is produced in nature by various physical and chemical processes. For example, from burning of fuels, heat is also produced. Like जैसे आप बहुत सारे ईंधनों को जलाकर हीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट की बात करें हम, तो heat can be transferred from one body to another or from one part of body to another. ट्रांसफर ऑफ हीट को हम कह सकते हैं कि जब कोई एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफर होती है, तो उस प्रोसेस को ट्रांसफर ऑफ हीट कहते हैं। या फिर बॉडी के एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट तक जब हीट जाती है, तो हम उसको ट्रांसफर ऑफ हीट कहते हैं। For example, when a vessel containing water is kept on a stove, the bottom part of the vessel is in contact with the fire. After some time, the water in the top layer also gets heated up. Here, heat is transferred from the bottom layer of water to the top. जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा किचन में, जब आप किसी वेसल को गैस स्टोव पे चढ़ा देते हैं और उसमें लिक्विड फिल होती है, तो आप थोड़ी देर बाद देखने लगते हैं वो हीट होने लगता है और जो उसकी बॉटम लेयर होती है वो धीरे धीरे हीट को टॉप लेयर तक ट्रांसफर करने लगती है। एंड यू फील हॉट व्हेन यू टच द हैंड ऑफ अ वेसल केप्ट ऑन द स्टोव। जब आप गैस पे चढ़े किसी वेसल के हैंडल को टच करते हैं, तो आप कैसा फील करते हैं कि वो हॉट होता है। Similarly, if one end of metal rod is heated,
then the other end of the rod also becomes heat due to transfer of heat. We feel hot or warmth due to the sun's heat, which is millions of kilometers away. हमें जब हम सन लाइट के कांटेक्ट में आते हैं तो हम कैसा महसूस करते हैं कि या तो वार्म या फिर हॉट फील करते हैं, लेकिन सन तो बहुत किलोमीटर मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर होता है, तो वो तब भी हमें गर्मी का एहसास होता है. So all these processes are mode of transfer of heat. But how can we differentiate uh, these transfer of heat processes? So heat can be transferred in different modes. They are conduction, convection, and radiation. So the first process is conduction. In the second example, why do we feel hot when we touch the handle of a steel vessel kept on a stove? जब हमने सेकंड जो एग्जांपल दिया था, जब कोई वेसल गैस स्टोव पे चढ़ा होता है वैसे तो उसका हैंडल छूने पे हमें गर्म क्यों लगता है? तो वो इसलिए होता है क्योंकि कंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही है from higher region to colder region without any visible movement of the material. हमें हीट फ्लो जो होती है उसका मूवमेंट दिखाई नहीं देता है, लेकिन पार्टिकल्स में हीट ट्रांसमिशन होता रहता है फ्रॉम हायर टू कोल्डर रीजन. Similarly, if one end of a metal rod is heated, the metal flows the heat from hot end to other end, which is at the lower temperature, and after some time that end to become hot. अगर हम किसी मेटल रॉड को गर्म करते हैं और फिर उसको थोड़ी देर बाद उसी हीट पे रखते हैं, तो हम पाते हैं उसका जो दूसरा सिरा होता है वो भी गर्म होने लगता है. सो दिस shows that heat is transmitting from higher region to colder region. So this phenomena of transfer of heat from a region of higher temperature to lower temperature through a body or a substance is called conduction. So there are several conditions for conduction, like the two objects should be in contact with each other. जिन दो ऑब्जेक्ट में कंडक्शन हो रहा है वो आपस में कांटेक्ट में होने चाहिए. द टेम्परेचर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट शुड बी डिफरेंट एज हीट फ्लोज फ्रॉम अ हायर टू लोअर टेम्परेचर रीजन. और टेम्परेचर दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डिफरेंट होना चाहिए, तभी हीट हायर रीजन से कोल्डर रीजन में फ्लो होगी. So when heat flows from region of higher temperature to lower temperature until the temperature of both become equal, this condition of maintaining a temperature equal is known as thermal equilibrium. So conduction takes place in three states of matter, that is solid, liquid, and gases. However, conduction is faster in solid because uh, solid particles are very closely uh, arranged with each other and followed by liquid and then gases. So let's understand what are good or bad conductors. Do all conductors or materials allow heat to pass through them? That is, conduct heat in similar manner? If you take a wooden scale and a metal scale and keep one end of candle on each, in which scale with other end become hot?
hot faster, it will be observed that the metal scale become hot first. All materials do not allow heat to flow through them in the same way. In fact, some materials do not allow heat to pass through them at all. The materials or substance which allow heat to pass through them easily are called conductors of heat. जो मटेरियल या सब्सटेंसेस हीट को इजीली पास करते हैं और अलाउ करते हैं पास करने से, वो कंडक्टर कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर and materials like steel and glass are good conductors of heat. The materials or substance which do not easily allow heat to pass through them are called bad conductor or insulator. जिन substances या material से heat easily flow नहीं हो पाती है, उनको हम बैड कंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स कहते हैं, लाइक प्लास्टिक या वुड. आपने अपने घरों में देखा होगा कि लकड़ी के या फिर प्लास्टिक के सामान बनाए जाते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट को कंडक्ट नहीं कर सकते इजीली. सो दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट. So application of good conductors and poor conductors are: cooking utensils are made of good conducting materials like steel, aluminum, copper, etc. The handles of cooking vessels are also made of bad conductors like wood or plastic so that they are not hot to touch. Similarly, animals and birds keep their bodies warm due to the trapped air in their furs or feathers. Aluminium is also a good conductor. The heating pad of an electric iron is made up of iron or steel because iron and steel are good conductor of heat, whereas the handle is made of plastic, that is bakelite, which is bad conductor of heat. The inner walls of thermos flasks or insulating bottles, which keep the hot liquid and cold liquid cold, are made of poor conductors so that heat does not escape. So this is all about conduction. And the second way of transmission of heat is convection. So convection is the process of transmission of heat from region of higher temperature to region of lower temperature by circulating movement of the fluid. In convection to heat travels from hotter to colder region. However, convection takes place only in liquid and gases, as in these states of matter, only the particles are loose enough to move. कन्वेक्शन लिक्विड और गैसेस में इसलिए होता है क्योंकि इनके पार्टिकल्स लूजली अरेंज होते हैं और उसमें हीट ट्रांसमिशन इजीली हो पाता है. So application of convection: we feel the warmth of fire from some distance due to convection. अगर कहीं पे आग जल रही होती है तो हमें कुछ दूर से ही पता चल जाता है क्योंकि वहां से उसकी गर्माहट ट्रांसमिट होती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि कहीं दूर पे फायर या फिर आग जल रही है. रूम हीटर्स, ब्लोअर्स, कन्वेक्टर्स keep the room warm because of transfer of heat due to convection. Similarly, smoke being hot rises, therefore chimneys are found at the top near the roof. And if we see in houses, exhaust fans are placed at the top or at the ceiling level so that hot air and smoke rise due to convection and escape. And sea breeze and land breeze that are also caused due to the convection of air, and they are called as convection current. Now
The third process is radiation. Radiation is the transmission of heat from one place to another by means of infrared radiation which can travel through vacuum or air. रेडिएशन प्रोसेस होता है वो वैक्यूम या फिर एयर में ट्रेवल करता है. If we talk about application of radiation, so we are said that white we they are preferred to wear white or light color clothes in summers because they reflect heat, thereby cooling us, keeping us cool. हमें समर्स में लाइट कलर के या कॉटन क्लॉथ्स इसलिए पहनने के लिए कहा जाता है क्योंकि लाइट कलर क्लोथ्स reflect the heat and keep our body cool. Uh, and in winters, we are advised to wear dark color or black color clothes because they absorb more heat and keep our body warm. So objects like solar cookers and cooking utensils are painted black to absorb more heat energy. Thus, it can be seen that heat as a form of energy can flow from region to another region by different modes of heat transfer. So, if we compare all three processes, that is conduction, convection, and radiation, there are few differences like in conduction, physical contact is present and in convection physical contact is optimal, but in radiation there is no physical contact. If we talk about conduction, it takes place in all three states of matter, but in convection it takes place only in liquid and gases, whereas in radiation no medium is required. Conduction is the heat flow in all direction. कंडक्शन में क्या होता है, हीट सारे डायरेक्शन में फ्लो करती है, बट इन कन्वेक्शन हीट फ्लोज इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ करती है, इसीलिए सर्कुलेटरी मोशन होता है पार्टिकल्स में. बट इन रेडिएशन हीट फ्लोज इन ऑल डायरेक्शन. सो in this image we are seeing that all three processes are very easily seen, which are conduction, convection, and radiation. If we talk about conduction, it is easily seen in handle, which gets heated when vessel is kept on gas stove, and the process convection is seen when the liquid inside the vessel is heated and its particle starts moving in circular motion and the heat flows in upward direction. Whereas in radiation, no medium of heat transfer is required and heat flows in all directions. So these are the three processes of heat transfer, conduction, convection, and radiation. So it's all about today. Thank you so much.